Okay, dear students, let's start with our second session. This one is about short-term plans and long-term plans. We were on, these students, we were on what we can say types of plans. So when we are talking about types of plans, okay, before moving toward long and short-term plans, we have to know about the strategic plans. Now, what's the concept of strategic plans? Or what it is, basically, strategic plans क्या होते हैं? Generally, strategic plans की very simple definition and concept, sorry, और इनको मैं यहाँ पे भी highlight कर देती हूँ. Strategic planning include a high-level overview of the entire business. That means it's about big picture representation of the business. Big picture representation means we are talking about overall business of the organization. That means we are talking about the overall scope of the management of the organization, right? So that means we are talking about जब big picture होगी पूरी organization की बात होगी, so that means we are talking about at the same time we are talking about the top level management of the organization. So it's the foundational basis of the organization and will dictate long-term decisions. It will dictate the long-term decision. The scope of strategic planning can be anywhere from the next 2 years to the next 10 years, right? So when we are talking about scope of strategic planning, so that can be for next 2 to 10 years. So generally it's for long-term plans. Strategic planning जो है वो long term होती है. जब scope of strategic plans की with relevant to management scope आप की जाए तो वो top level management है, because top level management की responsibility होती है पूरी organization के लिए सोचना, plan करना and all that. So it's the foundational basis. That means overall organization जो है वो आपकी इन्हीं पे dependent होती है, and these are the long-term plans, right? And that is always linked with the vision, mission, and values of the organization. And it's about, you can say, time period की बात करें तो it's about 2 to 10 years plans, right? So these are the 3 points. High level overview, big picture representation होती है. That means top level management के end पे ज़्यादा responsibilities होती है. Scope of management पूरी organization के लिहाज से होता है. So high level overview है. दूसरी चीज इसके point of view से it's for long term decisions, it's for long term plans. Generally strategic plans long term plans होते हैं. And third thing is about strategic planning can be anywhere from the next 2 to 10 years. That means most of the time it's about 2 to 10 years. That means long-term plans की जब हम बात करें, it's always linked with the vision, mission and values. जो आपकी long-term plans के point of view से, what's the basic vision, mission and values, उनके साथ आपके strategic plans use होते हैं जी या link करते हैं. Okay, there is no need कि हम ज़्यादा इसको technically या difficult mode में जाएं conceptually. हम simple form में चीजें cover करते हैं. 6 chapter में in detail ये सारी चीजें होंगी. To best understand the relationship between the different types of plans, let's start at the top, from the top. So that means we are talking about सबसे पहले जो आपके plans होते हैं वो कौन से होते हैं? Strategic plans होते हैं, जिनको हम कहते हैं that is always linked with the top level, are designed with the entire organization in mind and begin with the organization mission. So that is about strategic plan. I hope so students आपका strategic plans का simple concept है, clear होगा. Okay, top level manager, आगे एक example दी हुई है, generally हम go through हो जाते हैं. Just like CEO, president execute the strategic plans to paint a picture of the desired future and long-term plans of the organization. Strategic plans look ahead to where the organization wants to be in 3, 5, 10 years. Strategic plans provided by top level managers serve as the framework for lower level planning as well. So they have to plan, and that is planned by the top level management or manager, and they have to plan for the lower level plans as well. That means overall जो आपकी top level management है, वो top, middle and lower तीनों के regarding जो plan करती है, उसको हम कहते हैं strategic plans. Tommy is a top level manager, and he has for Nino's this area, he has again make the strategic plans
for the overall long-term organization to achieve the long-term organizational goal of that, what we can say, this area. And that means to develop the long-term strategies for achieving the growth, improving the productivity, profitability, and you can say customer services, and finding ways to give back to community in which it operates. So that is the basic purpose, and this is what he has planned for long term for the growth, productivity, profitability, and customer services को कैसे बेहतर बनाया जाए, growth कैसे achieve की जाए. So that is about strategic plan. This is what he has done for his overall, what we can say, that this area pizza center. ओके, ऑपरेशनल प्लान्स की हम बात करते हैं जी. ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं जी? ऑपरेशनल जो है वो इट्स लिंक विद ऑपरेशन, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, सो व्हाट वी हैव टू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट? And middle level management is responsible for always for what? Implementation of strategies, policies, and plans made by the top level management. So that means top level management ने क्या बनाया? आपके strategic plans बनाए हैं. So strategic plans that is made by the top level management, और implementation किसके through होगी? Middle level management के through होगी. We know very well. So operational plans जो हैं वो generally that is made by the again middle level management. So this type of planning typically describes the day-to-day running or routine basis running of the company. Operational plans are often described as single-use plans or ongoing plans. Generally ये दोनों हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे. Single-use plans are created events and activity with a single occurrence and single marketing campaign. Ongoing plans includes policies, procedures, problem rules, regulations, procedures, and step-by-step process to accomplish the objectives, and that is what long term. So that is about ongoing or standing plans. सो ऑपरेशनल प्लान्स को हम देख लेते हैं जी. इसको जनरली बताया हुआ है यहाँ पे. इसके प्रोसेस को, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल के प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, 6 वीक के अंदर. रैंक द फ्रंट लाइन मैनेजर एट लीनो बजेरिया. अगेन बीइंग अ मैनेजर, ये आपका फ्रंट लाइन मैनेजर है, राइट? ही इज नॉट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट. व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अच्छा जब हम स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं तो उसमें हमने टॉप लेवल मैनेजर की बात की है, ठीक है जी. यहाँ पे हमने बात की है फ्रंट लाइन मैनेजर, दैट मीन्स हम मिडिल मैनेजर की बात कर रहे हैं जो ओवरऑल आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहा है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? उसने क्या सोचना है और क्या किया है? असेसिंग, ऑर्डरिंग, स्टॉकिंग, inventory, creating a monthly budget, developing a promotional advertisement for the quarter to increase the sale of the certain product. So this is for outlining the employee's performance goals for the year. So this is what Vivian's result. So overall, this is what he has observed regarding this is what his responsibility to improve the overall, to make the monthly budget, to improve the overall what we can say promotional advertisement जो उनकी होती हैं उनको कैसे बेहतर बनाना है, for the quarter to increase the sales of the organization or sales of the product and all that. So ये आपकी किसकी है? मिडिल लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसने इनको इम्प्लीमेंट करवाना था लोअर लेवल मैनेजमेंट पे. कैसे सेल्स मैनेजर काम करेंगे या सेल्स फोर्स कैसे काम करेगी, सेल्स को कैसे इंप्रूव करना है, प्रमोट कैसे करना है एंड ऑल दैट. ठीक है जी, आगे चलते हैं जी. लॉन्ग टर्म प्लान, very simple. What's the concept of long-term plans? Long-term plans are most of the time that is about 3 years or more than 3 years when you have to go for make the plans. So 3 to 5 or more than that. So that is about long-term plans. It's crucial to ultimate success of the organization. They have to decide about the ultimate organizational success. A long-term plans for many business such as construction, hospitality, manufacturing generally extend 4 to 5 years into the future. That means जो overall आपके objectives होते हैं उसके लिए आपने क्या करना होता है? लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होते हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपका मेजर विजन होता है. फॉर द अदर फास्टर चेंजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली टेक्नोलॉजी companies, our long-term plans may only look 2 or 3 years into the future. So technological जो plans होते हैं उसमें 2 to 3 years के ये plan किया जाता है. It's not for very long time because technology काफी change होती रहती है. So generally it's for 2 to
3 years when we are talking about technological plans. After that, it becomes too difficult to predict the future with any degree of certainty. So that is the reason. For that matter, you have to go for 2 to 3 years. So जो crucial आपकी चीजें होती हैं उसमें लाइक इंडस्ट्री चेंजेस में चेंजेस हो रही होती हैं, तो इसलिए आप उसको 2 to 3 years प्लान करते हैं. उसके बाद आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको आइडिया नहीं होता, बिकॉज विद इन टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. So that is the reason it's not for very long time. So long-term plan, simple one is it's about 3 to 5 year. और इसके साथ आप कोई भी एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं. Okay, example, top level management is responsible for these plans. It is up to the CEO to make the changing condition, both external and internal, reflecting the organizational long-term plans. Okay, now with what is about short-term plans? Short-term plans देखते हैं और remaining हम next video में देखेंगे class. Okay, short-term plans generally allocate the resources for a year or less. They may also be referred to as operational plans because they are concerned with daily activities and standard business operations. Already I have told you, the short-term plans generally link with the daily activities and operational plans. So यहाँ पे short-term plans देखें आप, हम last वाली, sorry, like this one. So this is strategic plan and this is long-term plan. Strategic plans आपके long-term होते हैं, operational plans आपके short-term होते हैं अगर time frame की बात की जाए. तो यही चीज अभी हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. It's about, sorry, short-term plans. So it's on department based or it's on operational level. Our daily activities, individual based, we have to see. Like long-term plans, short-term plans must be monitored and updated, and this is the role of middle and first line management. ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया था कि जो short-term plans हैं ये किसकी responsibility है, ये आपके middle level manager की और first line manager की, इन दोनों की responsibility होते हैं आपके short-term plans. It's not about top level management responsibility. Different managerial levels have responsibility for implementing different types of short-term plans. So different managers जो होते हैं उनकी different responsibility के लिहाज से उनको different plans दिए जाते हैं. A department manager may be comfortable implementing operational plans for the entire year for her department. A marketing manager may direct a 3 to 4 month plan that involves the introduction of a new product line. अब वो कह रहा है कि एक मार्केटिंग मैनेजर है जो 3 to 4 month प्लान डिसाइड कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट प्लान इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन, कि हमने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है. प्रोडक्ट लाइन, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम बिजनेस, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन. लाइक व्हीकल्स की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स आप लॉन्च करते हो, दैट कैन बी एनी टाइप, तो वो आपकी व्हीकल्स में आ जाती है, ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन है. अगर आप कॉस्मेटिक्स में हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स सारी जो है वो आप उसकी लिंक उनको कैसे लॉन्च करना है वो प्रोडक्ट लाइन में आ जाता है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन. A team leader may only be comfortable planning and implementing very specific activities over the period of month. So team leader जो है वो specific activities को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, बीइंग अ टीम, कि आपने कैसे टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको लेके चलना है. राइट क्लास, सो आई होप सो इसमें क्लियर होगा. आप नॉट नेसेसरी यही वाली एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि आप मिडिल लेवल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप प्लान करते हो, एंड if you want to introduce some new product into the market. So अगर एक न्यू प्रोडक्ट को वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं तो ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर उसको ऑलरेडी यू हैव लॉन्च द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, सो उसको कैसे लेके चलना है और उसी प्रोडक्ट के अंदर, उसी लाइन के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो आपकी मिडल और लोअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, सो यू हैव टू सी कि कौन सा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सा मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो मिडिल और लोअर वाला जो है वो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं. सो आई होप सो एवरीवन इज क्लियर फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वाला जो है वो मैं थोड़ा शॉर्ट करके कर लूँ ताकि चीजें ज्यादा समझ आए. दिस वन इज अबाउट आवर नेक्स्ट सेशन.
जो आपका लेफ्ट ओवर भी था, आई थिंक सो ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू क्लास।